Well, I actually wanted to get into some e-commerce business, and I looked at several businesses, and that's when I realized that most businesses and most sectors are already quite clustered with other e-commerce companies, and I've lost that advantage which I would have had. The only sector which I thought had an opportunity was the agriculture sector. The sector still hadn't been tapped, and that's why I wanted to get into it. Within the agriculture sector, specifically, I thought that the lands was a huge opportunity. Because if you look around you and look at buying an apartment or a house in almost any metro in this country, you will be able to really zero down on that in the 30 seconds or 90 seconds. However, if a buyer wants land in Sonipat to grow some crop, or grow strawberries in Mahabaleshwar, or mangoes in the middle of India, or whatever it might be, and he wants to enter that business, it is almost impossible for him to find out. It is impossible for an outside buyer, and it's also extremely difficult for a buyer who's living in the village to know which lands are available, because the information is not available. That's when I realized that we've really struck gold and hit a huge, huge opportunity. क्लाउडफार्म्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर मानव इंदर सिंह जी को, जो कम्प्लीटली उनका ब्रेन चाइल्ड था, और हम दोनों के सर्टेन एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल सक्सेस जो हमें कॉर्पोरेट सेटअप में मिला, उसके बावजूद हम दोनों के रूट्स बहुत डीपली कनेक्टेड हैं विलेजेस के अंदर। हम दोनों फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और शायद हम दोनों ही जो प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, हमने शायद उनके साथ लाइफ ग्रो किया अपना। तो हम दोनों ने ये देखा है कि एक फार्मर डे टू डे लाइफ में कैसे स्ट्रगल करता है। इज़ ओनली एसेट इज़ लैंड, और इस स्ट्रगल को देख करके वी न्यू, हमारे को पता था कि ये कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, एंड वहीं से हमने शायद क्लाउड फार्म्स की उत्पत्ति हुई। हमने Imagine the lands of India on a cloud. Imagine a platform that is selling all the lands, agricultural lands of India. Even if 1% of land needs to be sold in a village, which it is, you're looking at about 3 crores to 20-25 crores per village of transaction value, which is huge. Our franchisee has the potential of becoming one of the largest businessmen in his area. At a national level, I really can't even calculate. There are 6,45,000 villages in India. If each village transacts even 10 crores a year, the figure is so big that I'm not even able to calculate it. My calculator also runs out of space. 54% पॉपुलेशन जो भारतवर्ष की है वो आज के डेट में कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो टोटल आज लैंड अवेलेबल है, एग्रीकल्चर लैंड, वो तकरीबन 10 ट्रिलियन US डॉलर्स की वैल्यू रखती है इस देश के अंदर। हर साल तकरीबन 30 लाख ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जिनकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो तकरीबन 15 बिलियन US डॉलर्स हैं। सो हम एक बहुत बड़े बाज़ार, एक बहुत बड़े मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है इस देश की। The entire journey starts from the seller. A seller or somebody who wants to even lease his land. He makes his page, uploads information, gets his account, which is a very simple process. After that, he uploads the details of the land. After all that is done, then he puts up the documents of the land, be it the revenue papers or any other relevant documents. Once that is done, the seller then passes the information on to the franchisee, which is passed seamlessly through the app. The franchisee goes through it, verifies it, and then it is sent to an onboarding team. Our onboarding team is the final gate, which says yes or no. If it's a yes, all the information of that seller's land is then available on our cloud for all our buyers to see. क्लाउड फार्म्स एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मॉडल है, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक सेलर बहुत आसानी से अपने ज़मीन की लिस्टिंग कर सकता है। अगर उसको अपनी ज़मीन को बेचना हो या किराए पे देना हो, वो हमारे एक सिंपल से 3 या 4 स्टेप के प्रोसेस के माध्यम से वो अपनी ज़मीन को हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेगा। सिमिलरली एक बायर जिसको ज़मीन खरीदनी है या जिसको ज़मीन का उपयोग करना है, वो इस ज़मीन को हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत इजीली सर्च कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, अपनी
साइट विज़िट अगर उसको करनी है, ज़मीन देखने के लिए जाना है, वो उसको अपनी विज़िट को शेड्यूल कर सकता है। और ये सारा बिज़नेस हम करते हैं फ्रेंचाइज़ी मॉडल से, फ्रेंचाइज़ी के माध्यम से, जो इन दोनों सेलर्स और बायर्स को आपस में मिलाते हैं। उनको ये ट्रांजैक्शन करने के लिए उनके लिए बहुत ईजी प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, उनके लिए सारा लेगवर्क करते हैं। A buyer sitting in any part of the country, if he wants land in any part of the country, he will be able to say, I want land in a specific village. He will be able to say, I want land which is specific for a certain crop. He will say, I want land which is a certain size. I want certain tube wells. So the buyer has several filters. Once he puts that search with the filters, our application, our software will give him the very lands that he is seeking for. So the buyer now doesn't have to go around that village or around that district or around that area to search for land. So the Cloudfarm app is also really beneficial for large industries, food processing plants, and anybody that has some stake in agriculture. Could be warehousing, could be whatever. In the Cloudfarm app, sitting at an office in Bombay or at a fancy office in Delhi, the industry can pinpoint exactly where the land is available. They can pinpoint exactly the price that they want to land at. एक तो ये प्रोसेस इतना सरल है कि वो घर बैठे अपने ऐप के ऊपर जा कर के क्लाउडफार्म के वो अपने आप को बहुत इजीली रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद वो अपने 3 या 4 क्लिक ऑफ ए बटन से वो ये देख सकते हैं कि उनकी ज़रूरत की लैंड कौन सी है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज़ या बजट या लोकेशन, बट ऑल्सो जो हमारे सर्च के ऑप्शंस हैं, जैसे वो क्रॉप टाइप के हिसाब से या सॉइल टाइप के हिसाब से, या एक उनको किस तरह की इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, तो वो अलग अलग तरह की ज़मीनों को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद अगर उनके पास 2 या 3 ऑप्शंस आते हैं, तो वो बहुत सरलता से उनको कंपेयर कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सी लैंड बेस्ट रहेगी इन टर्म्स ऑफ जो उनको ऑब्जेक्टिव, जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। वो जब ज़मीन को देख लेते हैं तो बहुत सरलता से हमारे ही पेमेंट गेटवे के माध्यम से, जहाँ वो बहुत सिक्योर्ड रहेंगे, जहाँ वो बहुत सेफ़ रहेंगे, उनके मन में एक शांति रहेगी कि उनके पैसे का कोई कहीं उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी या उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, और वो बहुत सरलता से अपने मेरे ऐप के माध्यम से वो इस पूरे ट्रांजैक्शन को अंजाम दे सकते हैं। Once a seller uploads his lands onto our platform, we are able to market this to not only his village, we are able to market it to at least 400 or 500 villages around him. We are able to market it to towns. We are also able to market to industry. So our software has a very, very deep and a very horizontal reach at the same time. And we are able to give the seller a huge amount, a very, very vast amount of buyers to come and buy his land. ये किसान के पास, जो उसके पास एक ओनली उम्मीद, एक आखिरी उसका एसेट या उसका आखिरी अवसर उसकी ज़मीन है, उसके अलावा किसान के पास कुछ नहीं है। और हम क्लाउडफार्म्स के माध्यम से उनको ये रीच आउट दे रहे हैं, उनको ये नेटवर्क दे रहे हैं कि उनकी ज़मीनों को, जहाँ वो पहले अपने आसपास 5-10 गांव के अंदर में अपनी ज़मीनों को शोकेस कर पाते थे, आज उनको अगर कोई ज़मीन बेचनी होती थी या किराए पे देना होता, तो वो अपने लोकल पटवारी के पास या सरपंच के पास या अपने गांव के 1-2 जो लोकल एजेंट्स होते थे उनके पास जाते थे। इन पटवारियों के पास में या इन लोगों के पास में भी ये रीच आउट नहीं था। वो मैक्सिमम उनको 2 या 3 या 4 कस्टमर दे पाते थे, जिसके वजह से या तो उनको वैल्यू कम मिलती थी, उनको उनके ज़मीनों के सही दाम नहीं मिलते थे, या फिर उनको ज़मीनों को बेचने में बहुत टाइम लगता था। आज हमारे इस ऐप के माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम एक किसान जो अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है या किराए पे देना चाहता है, उसको हम एटलीस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा बायर प्रोवाइड कर सकें। So a franchisee's main role initially is to go village to village and convince people to put up their land on our app. They should inform people, apprise people that by putting their lands on our app, they will get many more buyers or lessors, and obviously then that means they will get a better price. The franchisee, most importantly, has to go and verify the documents. He needs to see that the land is good, that the title is good, because we want our buyers to know that this is a genuine platform.
The franchisee's next role is to keep looking at his dashboard. In his dashboard, he will be able to see all the activity in his area. He'll be able to see the buyers who are keen. He will be able to see the activities between the buyer and the seller. And whenever he sees that there's a good chance that there's a deal that's going to happen, there are site visits that are planned, he needs to then jump and contact the buyer and take him for a site visit. After he does the site visit, he needs to make sure that everything is transparently done between the buyer and the seller. After that is done, then he needs to do the documentation process, do the agreements, the initial agreements, the advances, and so on and so forth. And finally, help the buyer and the seller go to their respective tehsils and close the deal. फ्रेंचाइजी का रोल हमारे यहाँ सिर्फ सेलर्स की लिस्टिंग कराना या उनकी सहायता करना, अपलोड कराने में उनके लैंड को या उनके लैंड को वेरीफाई करने तक सीमित नहीं है। जब एक सेलर और एक बायर आपस में मिलते हैं तो फ्रेंचाइजी का रोल बड़ा क्रिटिकल है। उनको न सिर्फ आपस में मिलाना, उनके बीच में एक अग्रीमेंट कराना, बट उनको एंड टू एंड सहायता करना ताकि उनकी जो डील की लीगैलिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, पेपर वर्क है, सो ये सारी चीज़ें एक फ्रेंचाइजी बहुत आसानी से वो ये करा सकता है क्योंकि हम उसको ऐसा ट्रेन करते हैं। The franchisee is now sitting on 20 villages, which means 50,000 to 100,000 acres of land. He is going to become the master franchisee of the area. So typically in 20 villages, there would be, let's say, over 70, 80 brokers. All that business will go to a franchisee because a franchisee now has a power. He's got the power of the app that we have built. He's got the power of the buyers that we're going to bring to him. He's got the power of the sellers that he brings to the app. हमारे यहाँ हम फ्रेंचाइजी के माध्यम से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा दे रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी जिसको हम 20 गांव उसकी टेरिटरी देते हैं एक ज़िले के अंदर, जहाँ पे वो अपना व्यवसाय करेगा। इस ज़िले से जो भी जो ज़मीन की खरीद और बिक्री होगी वो हम इस फ्रेंचाइजी को के माध्यम से रूट कराएंगे। अगर मैं बात करूँ तो भारतवर्ष में इस वक्त करीब 6 लाख गाँव हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि हर गांव के अंदर ऑन एन एवरेज 5 ट्रांजैक्शंस ज़मीन की हर साल होती हैं। हमने एक फ्रेंचाइजी को 20 गांव उसके टेरिटरी में दिए हैं, जिसका मतलब है तकरीबन 100 ट्रांजैक्शंस उसके एरिया में होता है। हम अपने फ्रेंचाइजी को प्रोत्साहित करते हैं कि वो साल के अंदर इसका 60% सिर्फ 60 लिस्टिंग्स वो अपलोड कराए हमारे प्लेटफॉर्म पे। बहुत ईज़िली हम सोशल मीडिया और अपने जो दूसरे तमाम मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं हमारी, हम उसके माध्यम से बायर्स तक पहुंचते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि हम ये 20% ट्रांजैक्शंस कन्वर्ट करा देंगे। अगर किसान की 60 लिस्टिंग्स एक फ्रेंचाइजी हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे ऐप पे अपलोड कर दे और उसका 20% हम कन्वर्ट कर दें तो तकरीबन हम 12 ट्रांजैक्शंस हर साल एक फ्रेंचाइजी के लिए क्रिएट करते हैं। अब अगर एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑन एन एवरेज 1 करोड़ की है और इसका 2% फ्रेंचाइजी को रेवेन्यू मिलता है तो हर ट्रांजैक्शन पे वो 2 लाख रुपए कमाता है और 12 ट्रांजैक्शन का मतलब वो 24 से 25 लाख रुपए बहुत सरलता से अपने घर बैठे बैठे करा सकता है, सिर्फ 5 ज़मीनों को अपलोड करके हर महीने। इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंचाइजी को, वो अपने एरिया में जहाँ वो उसको टेरिटरी है, जहाँ पे उसको 20 गाँव अलॉट हुए हैं, उन 20 गाँव के अंदर उसको जाके प्रचार प्रसार करना है, उसको जा कर के लोगों को समझाना है कि उनको कैसे क्लाउड फार्म के ऐप से जुड़ के उनको फ़ायदा होगा।